we are starting our next session, which is titled as Pakistan Left Review. We have our speakers with us, Mr. Stephen Lyon from Aga Khan University, Salima Hashmi from Beacon House National University, in conversation with Taimur Rahman from LUMS. Assalamu alaikum everyone. Welcome to this session, which is going to be a review of this book, this edited volume that has just been published by Oxford University Press, called Pakistan Left Review Then and Now. इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि मैं आज सुबह जब अपनी वालदा मोहतरम को मिल रहा था तो मैंने उनको बताया कि I'm doing a session on the Pakistan Left Review. She stood up and said, Pakistan Left Review? मैंने कहा जी, do you know about it? She said, हाँ, हम भी पढ़ा करते थे. मैंने कहा आप कैसे पढ़ा करती थी? ये तो लंदन में शाया होता था. नहीं, हमारे पास भी आया करता था, हम भी पढ़ते थे. So you can see that the journal had an influence on the Pakistani left, despite the fact that it was published in London. So without taking too much of the time on the microphone, let me come to the book itself. This is an edited volume by Nadir Chima and Stephen M. Lyon, and Salima Hashmi is also a contributor in this in the original Pakistan Left Review, as well as in this particular edition, in the way of the artwork that she has done for the cover, etc. So let me start with you, Stephen. Thank you so much for joining us. And could you walk us through the process of writing this book? You must have come across the archives of the Pakistan Left Review at some point. और स्टीफन जो है वो उर्दू भी समझते हैं, मगर वो जवाब जो है अंग्रेज़ी में देंगे, क्योंकि वो अगर उर्दू में जवाब देंगे तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाएगा, तो उन्होंने कहा मैं अंग्रेज़ी में ही जवाब दूंगा. So how did you come across the Pakistan Left Review, and how did you put it all together? What was the process of writing this book? Well, I have to give credit to Nadir Chima for that. So Nadir Chima he's very active in leftist circles in London. I think without necessarily being a leftist himself, this is the social circle he travels in. And it's really thanks to his relationship with Mr. Aziz Kurta that he was given permission to reproduce all of the issues of Pakistan Left Review from 1968 to 1970. Now, Nadir had been working on this for some years, as you know, and it sort of faltered, it sort of stalled, because I think with all due respect to everyone that he worked with, they're very good intellectual thinkers, but they are not that kind of workhorse that just knuckles down and does something. And so Nadir was kind of crying to me saying, oh, it's not going anywhere, it's not going anywhere. And I said, well, I'm not a leftist, I'm not that intellectually strong, but I'm a good workhorse. I can make things happen, I can push it through. And I read the journal, I read it all, and I was almost in tears at just how we didn't get where these young people were promising. The promise of the late 60s simply hasn't materialized. And I, after many discussions with Nadir, I thought, young people need to know that the promise is still there, right? So what is that? Your father says with the Jodin iska vada head, right? So that vada is still there. Right. We must renew our commitment to making the world a better place. And what better way than to remind young people who still have an investment in the future, to remind them that they're not starting from scratch. There is a world of intellectual thought, of commitment to social justice, to a better tomorrow that we can build on, that we can build from. We may abandon some specific ideologies, but we maintain that commitment to the principle of social justice. And what I read loud and clear, even from the kind of really ardent leftist Marxist, was that they care about people, they care about the most vulnerable. And of course, whether you're on the left or the right, I believe this should be our commitment, that we should care about one another, right? They're all our brothers and sisters, and we must be working to make a better place for it. And of course, then, when, of course, the eminent Salima Hashmi started WhatsApping me saying, are we going to do this? How is this going to happen? And it was thanks to Nadir and Salima, really, that this happened at all, because they were pushing me. And the one thing I'm good at as a dean is making some things happen, right? So this has been my job from the beginning, not necessarily providing the best
intellectual contribution, but making sure that the best intellectual contribution around us can see the light of day, because if it doesn't see the light of day, it doesn't have the impact. And I think, so much of what the left has written in Pakistan's own context has, we failed to archive it or to really, have it in a form where it's transferable to the next generation. So I think we owe a great debt to you for having done that. And regardless of whether one agrees with any specific article, it's a testament to the history of struggle and what happened. Now, this whole thing came together, और तुसी भी कुछ एहसास कर लो, उन्होंने फैज़ तुहानू सुना देता है तो तुसी भी कोई फैज़ पढ़िया करो, ठीक है ना? कुछ एहसास कर लो इस चीज़ का. बहरहाल जी, सलीमा जी आपके पास आते हैं कि you were also part of the so-called London group. This was not a formal name, I'm sure. It was sounds like because there are other London groups that have formed. Many London groups that have formed and so on. So tell us a little bit about this London group, how it came together, and what were its, what were you all thinking at the time? क्या सोच रहे थे आप? I think as Steve has mentioned, that this was a time, the 60s was a time in which many things were happening in Pakistan. For various reasons, our family had moved abroad. 62 में हमारी पूरी फैमिली, मेरे वालिद और हम सब लोग, जब उनको अयूब खान के ज़माने में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उनकी निगरानी होने लगी, तो उन्हें तय किया कि भाई ज़रा कुछ देर के लिए परदेश की भी हवा खाएं. ये अयूब खान के पीरियड? ये अयूब खान के ज़माने में. So he was going to get the Lenin Peace Prize and I was going to study in England. So he and I left. And we went first to Moscow, and that's another saga. And then my mother and my sister followed. तो वो तो पहले वो early 60s वाला ज़माना था. और उसके बाद फिर मैं वापस आई, फिर मेरी शादी होगी, वापस हम लंदन चले गए. So the 60s was a time of great change worldwide. The Vietnam War was on, the campaign for nuclear disarmament was happening, the struggle in South Africa against apartheid, and so on and so forth. Pakistan में eventually the decade of progress जो था अयूब खान का, वो इख्तिताम पर पहुंच रहा था और एक यहाँ पे भी एक सोशल मूवमेंट थी. तो ये हम जो लंदन में जब पढ़ रहे थे या काम कर रहे थे, अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में जो कि तब्दीली की एक ख्वाहिश है, उसके पीछे भी बहुत सारी क़ुव्वतें थीं. And there were labor movements, there were all kinds of things happening. The students in London, the groups in London wanted to contribute. और सोचा कि भी इनमें बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं, how to put them down. And it so happened that a few people got together. Among them was Iqbal Khan, who was the person who really thought about कि भी एक रिसाला निकाल लिया जाए जिसमें लोगों के साथ बातचीत की जा सके. पैसा जेब में एक नहीं था, तो ज़ाहिर है लोगों से एक पाउंड के हम कंट्रीब्यूशन मांगते थे. और तो पहला शुमारा इसी तरह से निकला, उसका कवर मैंने बनाया. और वो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर किसी का मांगा, एंड वी ब्रॉट इट आउट ऑन दैट. इट वाज अ वेरी मॉडेस्ट थिंग. The whole portion of it came about because we were students, or I was at that time I had started teaching in a school. We were people who were deeply concerned about Pakistan. And we felt that while we are here, we have to do something, we have to clear our thinking, we have to get like-minded people together. The journal was a result of that. We took part in demonstrations in London, whether it was the anti-Vietnam War, whether it was a campaign for nuclear disarmament. इतवार को जाके तो साउथ अफ्रीका हाउस के सामने हम प्रोटेस्ट में बैठते थे, वगैरह वगैरह. और वो जो एक वक्त था, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही थी. हमने महसूस किया कि हमारे जो मशरक़ी पाकिस्तान के जो हमारे हम वतन थे, वो उनकी जो बेचैनी और उनकी जो नाराज़गी थी, वो
एक पॉइंट पे पहुंच रही थी। और ये डिस्कशंस चलती थी। गैंजीज रेस्टोरेंट था एक, जिसके ओनर तसद्दुक साहब मेरे वालिद के दोस्त थे। वो उनका मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ था। वो हमें दोपहर को खाने के बाद हमें वो जगह दे देते थे, तो हमारी डिस्कशंस चलती थी। ये जर्नल उसके नतीजे में निकला था। When I think now of young people who, for different reasons, they don't know the history of thinking and concern. मेरे ख्याल में हम बहुत से लिहाज से we are standing today where we were in 1968. Really? और तो जब अजीज़ कुर्ता जो कि बीमार थे उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई मैं ये हमने जो रिसाला निकाला था, मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम आज भी पढ़ के और कुछ हासिल कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि भाई वो कहाँ हैं रिसाले? We used to have them, we didn't have them. Then Nader Chima found the whole record in the library in London School of Economics, got them. We got permission. We asked, by that time Iqbal Sahab had passed away in Lahore. We asked Aziz के भाई छाप दें, उन्होंने कहा ये छापें. So that's how the story started. अगर आप इसको पढ़ें तो you will see there were so many things that were happening then which are happening now. And मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें याद हैं वो अपने उन दोस्तों का दुख याद है जिनका ताल्लुक़ चिटगांग से था, ढाका से था, और जो हमसे वो शिकायत करते थे और जो हमसे गिला करते थे और जिसके हमारे पास हल नहीं थे। और मैं जब उनको कहती थी कि भी हमारा ये एक मुश्तरका स्ट्रगल है, मुश्तरका जद्दोजहद है, तो वो कहते थे कि भाई नहीं, लेकिन क्योंकि जो लोग आप पे हुकूमत कर रहे हैं हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। गालिबन हम जो मगरबी पाकिस्तान में थी हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा थी और उनकी कम थी। But whatever the reason, this is a magazine. I was not a theoretician or a student of politics. I came from a political family. I wrote my first article on art in Pakistan Left Review at that time. I see. जिसमें मैंने जायज़ा लिया कि पाकिस्तानी आर्ट क्या चीज़ है और क्या। And I had never written on art. I was an art student and I was an artist, मगर कभी लिखा नहीं था। तो अब जब ये तय हुआ कि भी दोबारा से हम ये सब रिसाले इकट्ठे करके उनको छापेंगे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने कहा भी आजकल का क्या, इसका ताल्लुक़ आज से क्या है। So that's when we went back to the idea that okay, so Steve and Nader and Rahman Subhan जो हमारे उस ज़माने में साथी थे मशरक़ी पाकिस्तान से जो बांग्लादेश में हैं, उनसे भी कहा जाए। और मैंने ख़ुद भी ये काविश की कि दोबारा से आज के दिन पाकिस्तानी आर्ट का जायज़ा लूँ और ये अपना पहला मज़मून देखूँ कि भी उसमें जो मैंने कुछ पेशन गोइयाँ की थी या कुछ अपने साथियों जैसे फ़नकारों से गिला किया था, क्या आज वो सही लगता है कि नहीं। और मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने चीज़ें उस वक्त लिखी थी वो सही नहीं थी, क्योंकि जो लोग ये जो इतने साल जो गुज़र गए हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने वाज़े किया कि वो उस इम्तिहान पे पूरे उतरते हैं जो कि मेरा ख्याल था उस वक्त पूरे नहीं उतरते थे। सो it was a way of really coming into the present, looking at the past, and trying to make young people realize that in 1958, what happened when the first military dictator took over and the state of Pakistan started to rot because the hope for democracy was gone. That is where the problem lies. ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर आज के नौजवान कहते ना, when they say today, you know, ज़ियाउल हक ने ये किया और ज़ियाउल हक ने वो किया. I was a young student in Lahore जब हमने demonstration निकाली जब Patrice Lumumba was killed by the CIA. We were so involved in the world.
I was in that demonstration. मतलब मैं मेरे ख्याल मैट्रिक में थी It या was in फर्स्ट Lahore? ईयर में थी in Lahore. Really? Big demonstration against the killing of Lumumba. Okay, so that was what we were in. There was a demonstration of 50,000 railway workers जब आटे की कीमत बढ़ गई थी. That was just before Ayub Khan took over. My mother was in that demonstration क्योंकि जो ख़वातीन जमहूरियत पसंद ख़वातीन का भी demonstration साथ था. And when Ayub Khan took over, my mother said, you see, this is what happens when the people come out in the street, the army has to take over. And we woke up in the morning and she said, you know, the tanks are on the road. I see. Okay? So people forget. They forget that it was during Ayub Khan's time that Hassan Nasser was tortured in the Lahore fort and killed. It began what happened during Ziaul Haq's time. ये एक सिलसिले की कड़ी है. सही. And I think that when you look at this, you can understand that this is part of our history. और मेरे ख्याल में कि जब आप तारीख की बात करते हैं तो ये याद रखना कि बहुत सारे नौजवान लोग उस ज़माने में दिलो जान से पाकिस्तान की फ़िक्र में मतलब फ़िक्र कर रहे थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान से बाहर थे. और ये एक छोटी सी काविश थी कि भी लेट्स गेट सम पीपल टुगेदर, लेट्स ट्राई एंड ब्रिंग आउट समथिंग, अपने जो सोच है उसका इजहार करें. 3 या 4 शुमारे निकले थे बस. उसके बाद पैसे भी ख़त्म हो गए और कुछ लोग वापस आ गए, कुछ लोग ने की हिम्मत रही. बट आई थिंक it was important to do this. Wonderful. Thank you for recounting that entire history. Now, there are some interesting themes that I see in this in the Pakistan Left Review. और मैं सोच रहा था कि बाएं बाजू पे अक्सर ये तनकीद की जाती है कि बांग्लादेश के मसले पर या ईस्ट पाकिस्तान के मसले पर बाएं बाजू ने कोई वाज़े stand नहीं लिया. But Stephen, I saw as I was reading through this book that actually there was a lot of passionate writing about East Pakistan and the crisis there and the economic deprivation and you know what was happening in the political realm and so on. Is that the impression that you also felt? Absolutely, yes. I mean, it was a reminder to me because I arrived in Pakistan in 1982 for the first time, and Bangladesh was almost hardly talked about. Right? I had heard, my mother had told me that there was a civil war, that there used to be this divided country, but I really never heard anyone talk about it. So reading this, it was like a snapshot into a Pakistan that could have been, a very different Pakistan that I think your point about the 1958 and that just fundamental crushing of people is actually, you know, it echoes the problems between an East and West Pakistan when you don't trust the people, when you don't trust democracy, then you will collapse. I mean, Hannah Arendt's point about violence exercised is an indication of weakness. I mean, this is a problem, right? When the Pakistan state is so afraid of its people, it's a weak state. It's a very weak state. The tanks look strong, but what it's revealing is it doesn't have control. It's not able to effectively mobilize people to move somewhere. Right. And reading these passages, and particularly since some of the articles were, of course, in Bangladeshi, right? Yes. This Bengali. Yes, I was quite surprised to see that. Yes. Yeah, and so we have the Urdu, we have the Bengali, Yes. and when I first came, there were still Pakistani rupees that had the Bengali writing on it. Right. So I could see that, and of course, one of the things, in all the rickshaw drivers, they had pictures of Ayub Khan. And I said, ye kaun hai? And they said, oh, yeah, hamara behreen leader tha. And so my introduction to Pakistan was, you won the 65 war, and Ayub Khan was the greatest thing that ever happened. I see. So reading this, I think was, for me, an education as well, because this history was masked from me. Right. I didn't know this history very well. I didn't realize just the extent to which and East and West Pakistan was a thing, you know, that people moved back and forth, and there were, you know, there were flaws with it, but that it was an actual coherent community of diversity, and that was quite powerful to me, and I think we can't recreate that. We can't go back there, and it's very difficult to maintain a country across such a great distance with a nation in the middle that is not your best friend. Right. I mean, that's a problem. It was always a problem. But it was fascinating to me to realize that in London, that disappeared. And of course, today in London, you look at graduate students studying in London, and the Punjabis across Pakistan, Punjab, Indian Punjab, who do they hang out with? Each other. Each other. Because they recognize that there is actually this
this thing that binds us, the things that, this sort of common cause that we can find if we can get the kind of political, rhetorical propaganda out of the way, then actually we can connect. And we see that in this magazine, that they did get that political rhetoric out of the way, and they could sit in a room and say, we have some problems, but the people who are in East Pakistan, the people in West Pakistan should have some unity. They should have some way to argue and not fall apart. Of course, they did fall apart. So. Yeah. सलीमा खाला, आपने 60s की बात की और जो आपने मजमून लिखा फ़न पर, वो मेरे लिए तो कम से कम सारी बातें नहीं थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा जानता नहीं हूँ. उसमें जो स्कल्पचर का आपने जिक्र किया, आपने पेंटिंग का जिक्र किया, चंद नामों के अलावा बहुत सारे नाम आपने और लिए जो मेरे लिए तो कम से कम नए थे. और फैज़ साहब की अपनी शायरी पाकिस्तान लेफ्ट रिव्यू के अंदर शाया होती रही, और भी शायरी होती रही. Two things that I want to ask you is, first, with respect to this particular work of art, which I believe is yours, what does it signify? Because I think I see a red flag in the middle. And second, I want to ask, उस ज़माने के अंदर तज्ज़िया भी बड़ा हुआ, और बड़ा मतलब फ़िरोज़ अहमद साहब का और लोगों का बड़ा सोफिस्टिकेटेड तज्ज़िया भी है इसके अंदर, डेटा के साथ एंड सो ऑन. तो मगर somehow 60s से 70s से जो चीज़ सर्वाइव की, वो ये तज्ज़िया नहीं था, वो तो हम जानते भी नहीं कि क्या था, बल्कि मगर जो आर्ट थी वो सर्वाइव की, वो आज भी लोग जो है सुनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं. तो इन दो चीज़ों पे रोशनी डाली, एक तो अपने आर्ट वर्क पे, और दूसरा ये कि आर्ट जो है, why did that continue and the other side just kind of seemed to have disappeared? I think that's a very good question, because I think that आर्ट सर्वाइव्ड क्योंकि उसके ऊपर कोई तवज्जो, सरकारी तवज्जो नहीं थी. I see. तो वो नज़र बचा के और काम होता रहा. I see. I think that जो सबसे ज़्यादा आर्ट को ख़तरा था वो ज़ियाउल हक के ज़माने में था. वो इसलिए क्योंकि अयूब खास पीरियड, द डिक्टेटर एंड हिज वेरी गुड ब्यूरोक्रेसी, which was very efficient, excellent, they realized that the dictator has to have a soft image. Right. We know that Right. story. Yes. ना बाद में भी repeat हुई. Right. तो उसके लिए you have to patronize the arts. You have to patronize poets. Either Writers Guild शुरू हुआ, आर्टिस्टों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने. सादकियान साहब को बहुत बड़े म्यूरल्स मिले स्टेट बैंक में, मंगला डैम में, वगैरह वगैरह वगैरह. We know that dictators use culture to make themselves appear more human and more people-friendly. Ziad dispensed with that, and that was the time. But by that time, I think you had got a group of artists and people who realized what was happening in Zia's time. Lihaza, and especially the women, because they saw what was going on. So they decided कि नहीं, हमने वो नहीं करना जो कि हमें कहा जा रहा है, हम इसके उलट करेंगे. वो कह रहे हैं कि जी आप ह्यूमन फॉर्म ना करें, आप जिस्म के ऊपर बात ना करें, आप फलाने करें, आप खताती कीजिए. तो किसी भी खातून मुसव्वर ने खताती नहीं की. अच्छा. कि हमने नहीं करना. आपने कह दिया? हमने कह दिया हमने तो करना ही नहीं. मेरी जो गैलरी थी, मैंने कहा जी ना हम लैंडस्केप दिखाएंगे ना खताती करेंगे. These two things we will not do. We'll show every other kind of work. So there was a kind of rebellion which was there during that period. I think that those years, from the 60s to today, the one thing that has flourished in Pakistan is contemporary art. और उसकी बहुत सी वजूहात हैं. उनमें ये भी हैं कि भाई आपके पास कुछ छोटे छोटे जजीरे थे. NCA एक जजीरा था जिसमें आपने बहुत मेहनत से और एक दूसरे को दोस्ती के साथ एक दूसरे के करीब लाए. Nobody sold out to the army pressure. I'll be very frank about it, because there was a lot of that. That's amazing. And we protected one another. We were targeted, but we always protected one another. So we survived. And we survived, and a certain kind of academic freedom remained in that institution, जिसके फ़ायदा आर्ट को हुआ. So we
the one thing that has flourished today, जब हम बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान में कोई चीज़ जो है वो फल फूल नहीं रही, तो मैं कहती हूँ नहीं, एक चीज़ फल फूल रही है, वो नौजवान फनकार हैं। आप जाइए लाहौर म्यूज़ियम में देखिए, कल शाम को एक नुमाइश का इफ्तिताह हुआ था, बिल्कुल यंग आर्टिस्ट, उन्होंने थिंकफेस्ट ने भी उसको सपोर्ट किया है, यंग आर्टिस्ट हु हैव रिस्पॉन्डेड टू व्हाट इज़ देयर इन द म्यूज़ियम। पुरानी चीज़ किसी को लेके उससे इंस्पिरेशन हासिल करके कोई नया काम किया है। ये कोई 8-10 आर्टिस्ट ने किया, ऑल यंगर पीपल। एंड आई वेंट देयर एंड आई वाज pretty depressed when I got to Lahore Museum. I'll be honest, I had been to somewhere, you know. तो जब मैंने जाके वो काम देखा और मैंने कहा भाई इस मुल्क में इस किस्म का मोजज़ा हो सकता है, you know, young people can respond to something that is old and produce new work, which is vibrant, which is dynamic, which is revolutionary in the way that they're doing it. It's incredible. और वो पाकिस्तान के हर कोने-कोने से ऐसे आर्टिस्ट बिल्कुल, छोटे-छोटे विलेजेस से। एक लड़की मुल्तान की थी, एक लड़का जो है वो पता नहीं कहाँ का है, and very interesting thing. I'll just describe just one. गंधारा गैलरी में one of the boys has done, बीकन हाउस का ही पढ़ा हुआ है, उसने गंधारा का एक संगे मरमर का लोटस का फॉर्म है इतना बड़ा, उसने वो लिया और एक वो पिलर पे रखा हुआ है, ऊपर से रोशनी पड़ रही है, उस फॉर्म के बीच में उसने एक बोल डाला, गोल्ड फिश बोल डाला, जिसमें 2 लाइव गोल्ड फिश जो हैं वो तैर रही हैं पानी में। You have गंधारा piece which is 800-900 years old and संगमरमर में, और उसके ऊपर there's a goldfish bowl, उसके बीच में 2 सुनहरी मछलियां जो हैं वो तैर रही हैं। Beautiful, beautiful. It's an incredible idea. It is so beautiful where the past and the present are together, and this is a mind of a young artist. So I am proud of the fact कि नहीं, हमारे नौजवानों में given an opportunity, वो जिंदगी की वो रमक है। Yes. शायरी में भी नज़र आती है, मौसीकी में भी नज़र आती है, तो हमें फ़न का काफ़ी शौक़ है। We have fun with fun. Stephen, मेरा आप सवाल आपसे ये है कि in the essays that we see, the political essays that we see, there are 2 relationships that seem to be very interesting. One is the relationship of the left to the Pakistan People's Party. वहाँ पे भी आप तारिक अली साहब का एक आर्टिकल है, इंटरव्यू है भुट्टो साहब के साथ, और आर्टिकल भी है जिसमें वो भुट्टो साहब पे तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ हद तक सपोर्ट भी कर रहे हैं, मगर ज़्यादातर तनकीद ही कर रहे हैं। और इसी तरह नेशनल अवामी पार्टी के दोनों धड़ों के हवाले से, नैब वली एंड नैब हाशानी के हवाले से, there are several things that have been written, and you know how the left is sort of thinking its way through that. I wonder if you, ये भी बड़ी दिलचस्प बात इसलिए है क्योंकि हम पे बाएं बाजू पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप तो मेन स्ट्रीम से कटे हुए थे, कुछ लोग कहते हैं जी आप तो मेन स्ट्रीम ही करते रहे, कुछ और करते ही नहीं रहे. What is your feeling about these twin relationships with the PPP and the National Awami Party as seen through the pages of the Pakistan Left Review? Well, I think what we see in these pages is exactly what you're describing, that people are thinking through things, and the left, the world over, eats itself better than anyone else. Right? So the interview with Tariq Ali and Zulfikar Ali Bhutto, I mean, of course, the articles that he wrote, I mean, you can see that they probably have a lot in common, but the details are profound. Mm-hmm. They disagree on some profound details. And of course, we see that in Bhutto's cabinet. Some of those people who stood by him at the beginning then were like brutally booted out because the finer details matter. And this is something that when you care deeply and profoundly, then those arguments are quite serious. And if you're, I'm not going to criticize any politician, but I know this in writ large in the academic, and I know that you know this, when you are running something, you start to think, I don't care about the details, I just need to get this job done. And so the purists who have been your allies become your bitterest enemies. And it's not that you actually have started disagreeing with each other, it's just I have started to prioritize not the detail, but I need 100 students in my university on September 1st. So somebody tells me we have to have so many of this province and this socioeconomic class, and I think yeah I want that, but I need 100 students. And so there we fall out over that. And I think what we see here is
that the left is actually pretty honest with itself. It criticizes itself, and it doesn't say the greater good is more important than the details of the policy or the details of the principles. So I think the articles, we see this is not just unique to Pakistan. The left everywhere is doing this. Look at the Labour Party in the United Kingdom. Cannot decide where it's going to be. And we all know they need to win the election, right? We know that we've got a party that has to be out. Is it possible for the left to just silence its internal debate long enough for a general election? And many on the left say, no, it's not possible because the principles are too important. And if we let yet another, mealy-mouthed center-left party in, it will be no better than a center-right party. And this is what I wanted the youth to see. Those debates are not new. It's not Gen Z that invented this Very true. cannibalistic kind of eating oneself. Very true. This has always been, you go back to George Orwell and George Orwell's characterization of the Spanish Civil War, it's exactly the same. You start out unified and then you realize, on principle, I disagree with that point or that point or that point. And it is the kind of, the head of a needle, the angels debating on the head of a needle. And I think these were angels. I think these were people, every single one of them actually was quite noble and virtuous and wanted a better world. And because of that, it matters so much that they actually can't decide which of these parties to go for. Is it Awami? Is it People's Party? Is it Communist Bhashani? Party? Yeah. I mean, all of them probably do want something. And of course, on the other side, they don't actually care that much about principle. It is about monopolization of power, control of resource. And I mean, you said the history needs to be renewed. How come we don't archive it? Well, I'm not going to blame the left entirely for that. I think there's an entire machinery on the other side that is trying to suppress this history, that's trying to not let Pakistanis know there were trade unions here, there was a communist party, there still is a communist party, tiny, but all of this existed and it didn't go away by accident. It went away because there was a huge force designed to make it go away. We see that across the Middle East. Communist parties, trade unions, cooperatives, all crushed in the Cold War because they were a threat to someone who didn't care much about principle, but they cared a lot about power. सलीमा जी, यहाँ हमने काफ़ी तारीफ़ें भी की हैं इस काम की, मगर जो एक बहरहाल चीज़ मुझे नज़र आई, जो एक काफ़ी बड़ा गैप कह लें मुझे नज़र आया, वो ये था कि आजकल के लेफ़्ट में कम से कम ख़वातीन के मामले को, और ख़ास तौर पे विमेंस एक्शन फोरम के बाद ख़वातीन के मसाइल को बहुत अहमियत दी जाती है, जबकि इन आर्टिकल्स में मुझे कोई ख़ास जेंडर के क्वेश्चन पे, ख़वातीन की आज़ादी पे कोई ज़्यादा मज़ामीन नहीं नज़र आए. इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? सारे लिखने वाले मर्द थे. मैं आर्ट के ऊपर लिख रही थी, बाकी सारे मर्द थे. No, you're absolutely right. इस ग्रुप में there weren't any women. I was the only one who was working, and frankly speaking, because I was not, in a sense, a political. In the rest of them, like the rest of them were very much to do with either studying law or politics, etc., anthropology and so on. मैं तो काम भी कर रही थी और इनके लिए एक पाउंड भी इकट्ठा कर रही थी. So it's a fact that there were no women as part of this. Not surprisingly, really, because women who were going to university at that time were a rarity from Pakistan. I see. Even from what was then East Pakistan. It was not very usual. And I think much later we had Zinat Ziad, who joined the group, but she was not part of the Pakistan Left Review. But she's about the only person I can think of from Pakistan who was part of our group there. So, and I think also that we had, earlier in Pakistan, while I had been, out on the streets demonstrating for the family laws ordinance and so on. So these were things that were to do with Pakistan locally. There we were looking at questions which have to do with war, nuclear menace, and those issues. I think involved in that the sensitivity to looking at women,
per se was very much a result of Ayub Khan, of Ziaul Haq's regime. Because if you look at what happened during the short period of People's Party government, there was an amazing spurt in high-profile women. For the first time, women became ambassadors. It was for the first time that you had women on public platform, you had women very extremely vocal as politicians. तो वो चीज़ जो थी वो 70s में उभर के सामने आई. And not particularly in that time, it was a later development. I think इसमें एक जो छोटी सी मज़े की 2 सफ़ों की लिस्ट है, 3 सफ़ों की लिस्ट है, वो है उस ज़माने में किताब छपी थी Who's Who in CIA. हाँ जी, इसमें है वो. तो उसमें वो किताब मेरे हाथ लगी. तो हमने कहा कि भी उसमें जो पाकिस्तान में CIA में काम करते थे लोग अमेरिकन, उनकी लिस्ट हमें ज़रूर डालनी चाहिए. तस्वीरें भी साथ छाप दी आपने. वो तस्वीरें नहीं थी लेकिन नहीं ये तो बचाइए तो. बट द थिंग वाज कि हमने इजाज़त से वो लिस्ट छापी थी. हमने इस बात से हम बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए कि पहला नाम जो था, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है, पहला नाम जो है वो एक ख़ातून का है जिनका नाम है जेन एबल, जो कि कराची में थी. She was posted in कराची. और हमने अपने अब्बा का बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि वो हमारे अब्बा से अक्सर मिलने आया करती थी. सो जब वो कराची में थे तो हमने मैंने कहा कि आपने पता नहीं उस CIA खातून को कितने सीक्रेट्स बता दिए. कहने लगे नहीं, मैं तो उससे सीक्रेट्स लेने के चक्कर में था. तो मेरा नहीं ख्याल उसने मुझसे कुछ हासिल किया. लेकिन वो लिस्ट आप देखें तो जो किताब तो खैर खासी ज़ख़ीम थी, लेकिन जो पाकिस्तान में जो CIA के लोग जो थे जिनको पोस्ट किया जाता था, वो लिस्ट सबसे ज़्यादा लंबी थी. मेरे ख्याल में ईरान, पाकिस्तान, फ़िलीपींस ये मुल्क थे जहाँ पे ज़्यादा CIA के ऑपरेटिव्स पोस्ट हुए थे. बट इट वाज वेरी फनी दैट द फर्स्ट नेम in that was a good pal of my father's. अच्छा जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा और फिर मेरे ख्याल से जो नाज़रीन बैठे हैं उनको भी मौका देंगे कि वो भी आपसे सवाल पूछ सकें. एक जो मौजू आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में छेड़ा वो ये था कि जिस तरह से उस ज़माने का बाएं बाजू और आज के ज़माने का बाएं बाजू और जनरली लोग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज़म, तालिबान का जिक्र भी आपने किया, उस ज़माने में जमात इस्लामी वगैरह को देखते थे. जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो उसमें मैंने देखा कि नैप अली ख़ान वगैरह का बड़ी हार्ड पोजीशन थी. यानी कि जो मुकामी मार्क्सिस्ट आप कह लें या लेफ़्ट के लोग थे, वो ये कहते थे दैट जमात इस्लामी इज़ बेसिकली अ फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन, एज आई रेड इन वन ऑफ द आर्टिकल्स. आपने अपने इदारिये में इन योर इंट्रोडक्शन आपने कुछ, मैं समझता हूँ निस्बतन सॉफ्ट लाइन ली कि in the sense that you said, well, you know, the rhetoric is sometimes similar to the left, but actually it's not the same, etc. Do you feel that? And I thought that also that the writers in the London group were themselves also taking a relatively softer line, let's say, very, very marginally, but or trying at least to find a little more nuance or something, perhaps. आज भी मैं ये देखता हूँ कि मुकामी पाकिस्तान का बाएं बाजू जो है वो बड़ा हार्ड लाइन है तालिबान के मसले पे. TTP, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, यहाँ बड़ी लड़ाई हुई है उनके साथ, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट कुव्वतों के साथ. और बाहर के बाएं बाजू के लोग, जैसे तारिक अली का आपने जिक्र किया, वो कुछ उसको एंटी इंपीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. इस पर कुछ रोशनी डालिए. मुश्किल सवाल है मगर. हाँ जी. No, it is very difficult because I think, you know, the world is more violent in some ways than it was. Not that it wasn't violent then, but there's more availability of violence. And of course, if you take away the trade unions, the cooperatives, if you take away the socialist parties, all those vehicles that people have for expressing dissent, then what's left? And you make people angry. You paint people into a corner. So, I mean, we tried very hard not to be unfair to Tariq Ali, for example. I think sometimes, you know, it's like Cat Stevens said something off the cuff and he got accused of being a supporter of the Taliban. And of course, Cat Stevens has spent years trying to explain, no, I'm not supporting the Taliban. That's not what I want. But you take something out of context, or not even necessarily out of context, you just ask someone something out of the blue, they answer, you know,
I have many friends who thought Osama bin Laden was a great guy, not because they believed in anything he did, but because he stood up to the West. So they named their children Osama, they named their children Saddam, they named their children, Muammar Gaddafi. They pick these names not because they understand anything about what they're standing for, simply they had the guts to stand up to the United States. And if you give people, if you take away the rhetorical tools for articulating their ideas, all that's left is that kind of knee-jerk, I don't like you, he doesn't like you, so he must be good, he must be on my side. And of course, I don't think anyone in this book would find Taliban even remotely acceptable. Of course. I think that probably is a given. That's a given, yes. But they might say, well, what do poor people do when you take away every other vehicle for mobilization, other than a religious one? And the religious one has been hijacked by people who are cruel and hateful, and I will go on the record saying I really don't like the Taliban. I think they're actually quite an unpleasant bunch, and I don't like depriving people of their rights. I don't like the attitudes about women, and I think that everyone in this book would agree with that. But what else do poor people do? Poor people, they have legitimate grievances against something, but they don't have the education, they don't have the institutions, and actually, frankly, the Taliban tries to deprive them of art. So they don't even have that way to express something through art. I went to a wonderful student art exhibition in the Arts Council of Karachi, and there's a young artist there, Ramsha Khan, who's got this sort of exhibition about human trafficking. And what vehicles do we have as individuals to say, this is an appalling, repugnant, monstrous thing that's going on around us? It's very difficult, to think about which party would you could tap into for that. And then you've got Mullah Omar saying, I will stand up for the protections of women. I will stop the exploitation of young boys and women. Okay, Mullah Omar stood for so much more than that, but this is the narrative you hear over and over again. He made it safe for young men and women to go from one part of the city to another without being raped, without being extorted for bribes, without being beaten. And that is very attractive if you have no other options. And that's the thing, is this is part of a much bigger piece that I think Salima Sahiba and I and others would like to give young people, to say they have options, they must explore those options. Taliban is not the only option for poor people. There are many, many more options. And we've heard a lot of pessimism in this conference. I'm far less pessimistic about the future of Pakistan than That's great to hear. Yes, I think there is a bright future here, but it's a future that the young people will have to seize, and they will have to think creatively about how do we do it. So this morning, when the Vice Chancellor, Professor Zaidi, said students need to start asking questions better, well, actually, we need to give our faculty the confidence to accept that those questions are not a threat. Those questions are the future. Absolutely. Right? So this is part of what we're trying to do. And I mean, I'm babbling on now, so please shut me up. But I think it's a very, very important question. But as you said, it's बहुत मुश्किल सवाल भी. नहीं, मुझे आपकी बात से ये समझ आई है कि it's not so much that anyone is saying anything positive about XYZ, but it's more about a criticism of how society has been deprived of any other avenues of expressing their grievances, and that is the central point. That I think that's absolutely right. All right, great, thank you. अब इस तरह करते हैं जी सर आप लेफ्ट की जो मूवमेंट है इस वक्त पाकिस्तान में इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के इसको कुछ अपने जो है मुतालबात पूरे करेगी, या आउटसाइड की कॉन्स्टिट्यूशन जो मुतालबात होंगे? कोई ये सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में लेक्चर तक ही है, ये लेफ्ट का इंटरव्यूज़ और मौजूदा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे गौर कर रही है स्ट्रक्चर को चेंज करने को, कैसे करेगी? Salima Khan, do you want to address that? It's not my field, but I will say that right now, आप तो constitution में रह के भी struggle नहीं कर सकते. So, it becomes like a question beyond a question. मगर मेरे ख्याल में चूँकि हम एक वक्त की बात कर रहे हैं, एक era की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो it was wide open कि ये जो स्ट्रगल है, ये जो जद्दोजहद है, इसकी शक्ल क्या होगी. सर्टनली इट वुड बी अ पीपल स्ट्रगल. हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जबकि 22 ख़ानदानों ने they had taken hold of the economy. I mean, that is what Ayub Khan is famous for. I know कि बसों के पीछे Ayub Khan की फ़ोटो होती है, but the fact remains, it saw a consolidation of the wealth
of the few. And it was a time when, agar aap dekhen to, there's a wonderful novel of the time called The Murder of Aziz Khan by Zulfikar Ghosh, which exemplifies, जब वो novel छपा था तो वो बैन हुआ था यहाँ पे और मैंने लंदन में पढ़ा था. It's a simple story of a worker who is killed by the industrialists because he tried to unionize the people. So जब हम आज ये बात करते हैं तो लोगों को ये मुश्किल होता है ये इवन विजुअलाइज करना कि इस मुल्क में ट्रेड यूनियन मूवमेंट किस कदर स्ट्रॉन्ग थी, यूनियंस कितने अहम थे, उन्होंने लोगों के लिए कितने हकूक़ जो थे मज़दूरों के हकूक़ वो हासिल किए. आज नहीं पता कि फिशरमैन्स कोऑपरेटिव कराची के हार्बर में किस कदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी कि मछेरों को सबको इकट्ठा किया, उनका एक कोऑपरेटिव बनाया. ये उस ज़माने की बात है व्हेन देयर वाज एक्चुअली पीपल्स कलेक्टिव लेबर एंड मूवमेंट. आज ये इवन सोचना बड़ा मुश्किल है. आप 6 बंदों की आप यूनियन बनाना शुरू करें तो इमीडिएटली यूर बरतरफ हो जाते हैं. जी ये पीछे साहब हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं. वंडरफुल. छोटे छोटे सवाल पूछें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ सकें हम और जवाब भी छोटे छोटे. सर जहाँ तक मेरा नॉलेज है, सोशलिज्म जो अवाम की हुकूमत है और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए और रूलिंग क्लास के होते हुए, और क्या रूलिंग क्लास और इस्टेब्लिशमेंट और सोशलिज्म को ऊपर आने देगी, प्रिवेल करने देगी या नहीं? तो आपने अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया. एक और सवाल लेते हैं जी. वहाँ पे नहीं देंगे ऑब्वियसली, वो खिलाफ ही होते हैं और क्या बात. जी इधर अच्छा सवाल था. थैंक यू. मोहम्मद अनस, और इकट्ठे करके बात करेंगे इसमें. मोहम्मद अनस फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी लेफ़्ट विंग का सवाल आता है तो मेरे ख्याल में यही आता है कि इट इम्पोजेज इक्वालिटेरियनिज़म इन अ सोसाइटी और कलेक्टिविज़म और कम्युनिटेरियनिज़म. मगर आप एक ह्यूमन नेचर के अंदर सेल्फिशनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा. और जैसे जॉर्ज ऑरवेल लिखता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल. क्या ये नहीं हो सकता कि ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ इक्वालिटेरियनिज़म? ठीक हो गया. Can we take a group of questions and then you can address them collectively? Because there's so many people who want to, I think, comment and ask questions. Hello everybody. My name is Izhar Hussain और मेरा सवाल ये है कि फॉर अ वाइल अगर हम कंसिडर करें कि लेफ़्ट की सियासत पाकिस्तान में आती है तो जो सवाल पेरिफेरी का, जो सवाल आइडेंटिटी बेस रेशल प्रोफाइलिंग का है, या जो सवाल आइडेंटिटी की बेस पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, वो लेफ़्ट में नहीं होगी. मजलूम कौमों का के हवाले से आप पूछ रहे हैं. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप भी बात करें, आप भी गुफ्तगू करें, आपसे भी हम सुने. अस्सलाम वालेकुम. उमैर माई सेल्फ उमैर फुरकान. मेरा तैमूर सर बेसिकली आपसे क्वेश्चन है कि जिस तरह लेफ़्ट का जो मेन राइवल अगर हमारी सोसाइटी में वो कंसीडर होती हैं वो इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि तो वो राइट और लेफ़्ट उसको जो है राइट को एलर्जी में. तो मेरा उसमें यह कि इस्लामिक जो मेन आइडियोलॉजी है वो भी यही है कि जो वर्किंग क्लास है, जो लोअर क्लास है, उसको अपलिफ्ट करना. अगर उस लिहाज से हम अपनी इस्लामिक और हमारा जो पाकिस्तान में मेजर तबका है वो इस्लाम के लिए बड़ा सॉफ्ट जो रखता है, और जब उसमें लेफ़्ट की अगर प्रीच किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है, तो वो ये समझते हैं कि ये शायद एथिस्ट माइंडसेट है या ये जिस तरह वो रशियन जी दहरियों का ये वाला कॉन्सेप्ट है. तो उसमें ये कि आपको उन कम्युनिटीज़ के लिए भी एक जो एग्जांपल, जैसे मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी है बांग्लादेश में, उनको रेड मौलाना कहा जाता है, तो इस तरह की एग्जांपल्स को ग्लोरीफाई किया जाए रादर दैन लोकल लोगों को एजुकेट करने के लिए, रादर दैन मार्क्सिस्ट और लेनिन जो है, और वो उनको समझ में भी नहीं आता उनके. और इसके लिए जिस तरह की यहाँ पे तो हमें लेफ़्ट को एजुकेट करने के लिए यहाँ पे गैदरिंग्स हम बनाते हैं, लेकिन जिस तरह 1977 में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए CIA ने अपलिफ्ट किया और मस्जिदों से तबलीग होती थी, तो वो उनके लिए एक जुम्मे का खुतबा और वो ऑलरेडी इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं और वो आइडिया ज़्यादा तेज़ी से प्रोपेगेट करता है रादर दैन इस तरह की गैदरिंग से हम लेफ़्ट के ओवरव्यूज़ को जो है वो प्रोपेगेट करें. चलें, दैट्स गुड एडवाइस फॉर अस. थैंक यू. यहाँ पे बैठे. हाँ जी, इधर भी आप इधर से पूछ लें. हाँ पूछना था कि हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का जो फेवरेट होता है क़यादत में उसने आना. सही. तो क्यों नहीं आप उनके फेवरेट पर? बड़ी कोशिश की है, यकीन जाने. क्योंकि और कुछ नहीं तो हम सेहत के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब एक दफ़ा ये एक पॉइंट ये वाला प्रोपागेट हो गया, देन देयर वुड बी मैनी थिंग्स टू डू.
इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि मैं दाढ़ी भी उगा लूँ और इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट भी हो जाऊँ। अच्छा, चले, ये भी ठीक है, सोचेंगे इस पे, सोचेंगे। थैंक यू। Assalamu alaikum. My particular question is, ma'am, I thought you highlighted the point history of the thinking and concern about in your time, but what I feel like it's a time of technology and the youth is more concerned about critical thinking and world is also moving towards a knowledge economy. Can you please relate your time with this time so it will be helpful for us, for youngsters, for future? ये तो बड़ा आपने ज़ख़ीम किस्म का सवाल पूछा है, इसमें काफ़ी वक्त दरकार है उसको जवाब देने, तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए। इधर से पूछने खड़े होके, वो खातून को पीछे दे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम फार राइट को देखते हैं, लाइक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनकी हमें प्रोपगेशन नज़र आती है टू द ग्राउंड, उनके लाइक काउंसलर्स भी नज़र आते हैं हमें, उनके हमें ऊपर नाजिम भी नज़र आते हैं और MNA MPs भी। हमें लेफ़्ट की साइड पे हमें उनकी ऑन ग्राउंड जो है वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नज़र नहीं आती, हमें इलेक्शन में उनके कैंडिडेट्स नज़र नहीं आते लेफ़्ट के। तो आप ऑन द ग्राउंड क्या काम कर रहे हैं एक्सेप्ट ऑन द सोशल मीडिया एंड द यूट्यूब? वेरी नाइस क्वेश्चन। वो अच्छा, मैं तो मेरी माँ बैठी हैं मेरी भी आंखें अब कमज़ोर हो गई। अच्छा, इस सारी डिबेट में मुझे एक बात का ख्याल आ रहा था कि हम प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, वो सब कुछ तो ख़त्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं, कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। हमारे पास लंपन प्रोलेटेरिएट बहुत वास्ट है, उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? बड़े मुश्किल सवाल पूछ लिए सबने। मेरा क्वेश्चन लीडरशिप के हवाले से है। अभी दूसरे पार्टीज़ को जब हम देखते हैं तो फिर लीडरशिप है उनके अंदर, राइट में है, सेंटर में है या लेफ़्ट में। अब लेफ़्ट की पॉलिटिक्स को जब हम देखते हैं, ज़ाहिर बात अगर हम तब्दीली की बात करते हैं थ्रू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के थ्रू आएगी। अब हमारी पार्लियामेंट में लेफ़्ट की कोई नुमाइंदगी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। माई क्वेश्चन इज़ वाई लेफ़्ट हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस ए लीडर? ऐसा क्यों हो रहा है अभी तक? ओके, थैंक यू। आखिरी सवाल इधर कर लेते हैं, फिर पैनलिस्ट की तरफ दोबारा आते हैं। इनको दे दें। सर मेरा सवाल ये है कि जो 1969 की दिहाई में जो एक स्टूडेंट यूनियन थी, उसमें लेफ़्ट की जो रिव्यू थी वो बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। फिर 1970 के बाद जो भट्टो का दौर शुरू हुआ, उसमें जो सोशलिज़म का जो पॉइंट्स थे, यानी सोशलिज़म की जो रिवोल्यूशन मतलब एक रिवोल्यूशनरी पॉइंट थी, वो भट्टो ले गया। ऐसे जो उधर जो लीडरशिप थी वो क्यों नाकाम हो गए। और इसके बाद जो स्टालिनिज़म और ट्रस्काइट की जो सेग्रीगेशन हुई, यानी मतलब इधर कुछ स्टालिनिस्ट है, कुछ ट्रस्काइट है, हम क्यों मतलब अगर लेफ्ट की तंजीम बन गई है और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट क्यों नहीं बनती? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सवाल आपने किए हैं और ये इन सब सवालों का जवाब इतने मुख्तसर वक्त में तो नहीं दिया जा सकता, मगर मैं समझता हूँ कि एक बात कहूँगा और फिर अपने पैनलिस्ट से इस पर जवाब लेंगे। वो ये है कि जो इस किताब से चीज़ साबित होती है वो ये है कि ये बाएं बाजू खुद ब खुद एमी बस मर नहीं गया या इसने वफ़ात नहीं पा ली, बल्कि जिस तरह स्टीफन ने कहा कि इसको बड़ी बाकायदगी से कुचला गया, दबाया गया उसी इस्टेब्लिशमेंट ने जिसके आप जिक्र कर रहे थे कि हम दोस्ती कर लें, और उनके साथ वो लोग मिले हुए थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊँ। तो ये बड़ी बाकायदगी से एक प्लानिंग के तहत जो है ना इसको दबाया गया, इसको ख़त्म किया गया। तो इस किताब की जो असल आफादियत है और जो असल इसका मकसद है वो यही है कि आपको एक विंडो मिले उस दुनिया में जो कि इसके दबाने से पहले एग्जिस्ट करती थी, जो कि एक बहुत मुख्तलिफ दुनिया थी, बहुत मुख्तलिफ पाकिस्तान था, जो हमारी जनरेशन बशमूल मेरे शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि बाएं बाजू क्या था, कैसे था और क्या उसकी ख्वाहिशात थी, क्या उसके अज़ाइम थे, क्या उसकी सोच थी। इसके साथ ही मैं सलीमा जी आपको भी दावत देता हूँ। मेरे ख्याल में आपने बात बिल्कुल सही कर दी, क्योंकि अक्सर लोग जब इस किस्म का सवाल पूछते हैं आपस अलावा इसके जो कि स्टीव ने कहा कि द लेफ्ट ईट्स इटसेल्फ, दैट इज़ ट्रू, बट आई हैव सीन, आई हैव विटनेस्ड एंड आई हैव वॉच्ड हाउ विद ग्रेट ब्रूटैलिटी, बहुत ही जिस आपने कहा कि कुचला गया है उन लोगों को, लेफ़्ट और राइट को तो आप छोड़ दें, जो लोग जो दिल और दिमाग रखते थे लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए, किस तरह से उनको कुचला गया।
जब हसन नासिर को लाहौर फोर्ट में टॉर्चर करके और मार दिया गया तो उसका क्या कसूर था? वो यही था ना कि वो मज़दूरों का लीडर था, इसके अलावा उसका कोई कसूर नहीं था। इस तरह से हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं वो इसी तरह से कत्ल हुए, मारे गए, उन्होंने अपनी जानें दे दी, उन्होंने लंबा अरसा जो है वो जेलों में काटा है, इस हद तक कि उनका स्पिरिट, उनकी जान ख़त्म हो गई। तो अगर वो लोग आपको आज नज़र नहीं आते, वो इसलिए क्योंकि एक मुहिम के तहत, एक ऐसी मुहिम की कड़ियाँ हैं जो 58 से चलती चली आई हैं और आज तक वो कड़ियाँ मौजूद हैं। आप पूछें उन लोगों से जो आज भी जेलों में हैं, आप पूछें उन लोगों से जो जिनके प्यारे गायब हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो कि दिलों में वो आरज़ू रखते थे कि हमारे लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हों और एक ज़्यादा आसूदा मुस्तक़बिल हो। तो वो लोग हैं और वो आपकी नज़रों से ओझल हैं, वो आपके माजी में भी थे, आज भी मौजूद हैं, मुस्तक़बिल में भी होंगे, लेकिन मुकाबला सख्त है। Stephen, would you like to say a few words? What can the left in Pakistan learn from the past, and what can it do today? Well, I actually would like the right to learn something from this book. Interesting. Because you asked, how come we don't have left leaders? How come the left hasn't led? And I think, well, at the local level, we have many leftist leaders who are very effective and very good. And at the local level, you can have a kind of consensus around one end of an ideological spectrum. At the national level, there's 220 million people. They're not all on the left. So I wouldn't want a Wazir-e-Azam who was hard left or hard right. What I want is a Wazir-e-Azam who thinks about all Pakistanis and understands that at that level, compromise and negotiation, that's where we're at. So you're never going to get the purest left dream leader. You hopefully never get the purist right dream, although I think we may have come close to that with Zia. But I think this is, at the national level, you're dealing with consensus who will never satisfy everyone. It's not consensus, it's compromise, where everyone will be a little bit dissatisfied, but we have to have that protection for the most vulnerable. So it's the right that needs to read this book and understand that people matter, people's voices matter, and they need to start compromising. Because I think actually the leftist leaders we've had, the reason we're dissatisfied with them is because they got into power and they realized there's a bunch of very conservative people in my country and I have to represent them too. And that's why I still, even though I'm not a Marxist, I lean left because the left has always had more humanity and the left has always reflected better that yes, those people like the Dariwala, who I disagree with on many things, they still deserve to live a decent life. They still have to have their protections. They can't be excluded just because we disagree with them. And then of course suddenly my radical leftist daughter will attack me and say, Daddy, you're selling out. I think, well, I'm not selling out. I'm trying to make space for everyone. And that's as true in Pakistan as it is everywhere else where we become polarized and want to exclude the people that lost. And I think that's profoundly unfair. So everyone should read the book, but particularly the right needs to read the book and realize there's some good ideas on the left that they should embrace. Thank you, Stephen. Thank you, Salima Hashmi. Big round of applause for our guests. और जाते जाते मैं ये फ़िक्रा आपके लिए अर्ज़ करूँगा कि फैज़ साहब से किसी ने कहा कि फैज़ साहब आप शायरी बड़ी खूबसूरत लिखते हैं मगर जो आपका अंदाज़े बयां है उसमें कुछ ज़रा बेहतरी आ सकती है। तो ग़ालिबन फैज़ साहब ने जवाब दिया कि जनाब अब सब कुछ हम भी करें, कुछ आप भी करें। तो मेरा भी आपको यही जवाब होगा कि अब सब कुछ हम नहीं करना है, कुछ आपकी बारी है, आप भी कदम बढ़ाएं और वो ख्वाब जो कि आवाम का है कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जिसमें सबके हकूक़, जमहूरी हकूक़ हों, सबकी बात सुनी जाए, जिस तरह स्टीफ़न ने बड़ी खूबसूरत बात की, और मज़दूरों और किसानों और मेहनत कशों और ख़वातीन और तमाम कौमियतों के हकूक़ को के जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनको कबूल किया जाए और आवाम का इख्तियार हो, वो नया पाकिस्तान बनाना, वो इमरान खान वाला नहीं, वो हकीकी तो चलो सॉरी गलत तरफ चला गया, MQM याद आ जाएगी या हकीकी जमहूरियत मुशर्रफ की याद आ जाएगी, मगर वो ख्वाब जो फैज़ साहब ने देखा उसको तकमील तक पहुंचाना सिर्फ इन 3 लोगों की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. Thank you, ma'am.